आप लोग अपनी वीडियो में कलर ग्रेडिंग, इफेक्ट, फिल्टर कैसे ऐड कर सकते हो इस भी रास्ता जरूर वॉच करना। सबसे पहले आप वो करना है कि वो अपनी काफी सारी वीडियोस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग एडवांस सेक्शन में क्लिक कर देना है। एडवांस सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग इस वीडियो को हाफ में कट कर देना है, जिससे कि वो वीडियो आप लोग की ज्यादा सिनेमैटिक टाइप भी लगे। रिमेन को हाफ में काट लेता हूँ। मैं आगे में हल्का से कट लगा देता हूँ। एनिमेशन करे देर में वो करना क्योंकि इस प्लेट वाले साइफन में क्लिक करके इस पे इफेक्ट हुए करना। आप लोग काफी सारे इफेक्ट वगैरह देखेंगे मिलेंगे जो आप लोग ज्यादा बेटर आ सकते हैं। आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बार ज्यादा बेटर लगा तो इसलिए मैंने आपकी इस वाली को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इस वाली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। से बात नहीं बताता चलेगा। और यहाँ पे भी आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग की वीडियो ज़्यादा सिनेमैटिक टाइप की तैयार। लास्ट में आप लोग रिजल्ट भी जरूर देखोगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी देखने को मिलेगी। देन इसके बाद मैं करूँगा कि वीडियो में एक फिल्टर को ऐड कर दूंगा और फिल्टर भी आप लोग काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को जो ज़्यादा पसंद फिल्टर है वो क्लियर है। क्लियर को मैं हमें 100 में सेलेक्ट कर देता हूँ और उसकी पूरे दिन को वीडियो में इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद मैं करता है कि इस इफेक्ट और सेक्शन में क्लिक करके वीडियो में इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। हर एक पार्ट में मैं एक नए की इफेक्ट को ऐड जरूर करूँगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाले सेक्शन को क्लिक कर लेता हूँ, देन इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जो दूसरा कट माना था यहाँ पे मैं एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ। वीडियो में फिट करने के बाद सिंपली से आप लोग उस थोड़ा सा स्क्रॉल कर दें, यहाँ पे ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना। आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आप लोग ज़्यादा बेटर लगे आप लोग उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोग इस थाल वाले एडिट में भी आप लोगों को एक फिल्टर ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने आप सिलेक्ट कर दिया। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा। उसके बाद मैं करूँगा कि यहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करके एडजस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। देन आप लोगों को ब्राइटनेस को -9 पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और कॉन्ट्रास्ट को आप लोगों को 8 पे सिलेक्ट कर लेना है, जिसकी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सुबह सैचुरेशन को आप लोगों को 18 पे सिलेक्ट कर लेना है। देन ब्रिलियंस को आप लोगों को -9 पे सिलेक्ट कर लेना है। शार्पन को आप लोगों को एटलीस्ट 10 के करीब रखना चाहिए। सबसे मेन होता है वीडियो में कलर ग्रेडिंग। आप लोग कलर ग्रेडिंग कैसे करते हो ऐसे ही आप लोग को वीडियो को डालते यूनिफॉर्म मिलेगा। अरे ये में सबसे मेन होता है कलर ग्रेडिंग। जैसा मैं एडिट कर रहा हूँ आप लोग सिंपल इस तरीके से एडिट करने से बाद में आप लोगों को फाइनल रिजल्ट भी जरूर दूंगी। फाइनल रिजल्ट किस तरीके से निकल कर आई है ऐसी बात मैं कर आपको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आपको आप लोग को डाटा चेंजेस करते हो तो इसका रिजल्ट जो आप लोग काफी अलग देने को मिलेगा। हाईलाइट को मैं 4 में सेलेक्ट कर लेता हूँ और शेडो को -6 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और टेम्परेचर को आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने -5 सेलेक्ट कर रखा है। देन इसके बाद वीडियो को इंक्रीज पूरी लेंथ तक फैला दूंगा। उसके बाद मैं लोग फाइनल रिजल्ट कैसे so much. Me get the money, get anything.